Pooja. I'm a counselor. I'm very much excited to welcome you all again in this session with Dr. Aarti Midha. So, our today's topic is diet and nutrition, which you all are familiar about, I'm sure, because you all have asked questions, and I have gathered few common questions which are asked by you all. So, I welcome Dr. Aarti Midha with our first question. So, our first question for today is one sec. Why do we need to maintain a low carb diet? कि हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मेंटेन करने की क्यों जरूरत है? So I welcome Dr. Aarti Midha to answer this question. First of all, I would like to express my deepest gratitude to all of you because you have taken time for this live session and would like to say thanks from my core of heart. And I really promise that I'm going to answer your questions as far as possible. I'll try to help you in my best way. So, the first question is, why do we need to have low carb diets? Understand that after the age of 45, blood sugar dysregulation, this is a normal part of our aging process. If someone is taking high carbs in the diet, carbohydrate बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, then what will happen? Blood sugar is on a higher side. And interestingly, our mood and our anxiety, this is related with the blood sugar stability. And we need to have stable blood sugar for our brain health. So if someone is on high carb diet, understand what will happen. Obesity, insulin resistance. And if obesity is there or insulin resistance is there, what is there? Blood sugar dysregulation. And that is related with mood swings, anxiety. So not necessarily that every obese person is having this, but this is one thing. And not only this, ADHD kids, 7 to 8 year old child, if ADHD child is having high HbA1c, and he is aggressive, if you are just managing his HbA1c with low carb diet, you will see improvement in hyperactivity. So brain needs stability in blood sugar. This is the answer of your question, Pooja. Okay. So we need low Shall carb we go diet. for next? Yeah, definitely, Yes, definitely. ma'am. Go for. Yes. Ma'am. How to manage getting off of antidepressants with diet? कि कैसे antidepressants से निकले डाइट को मेंटेन करते हुए? So this is a complex question. So understand diet is only one pillar. Diet is not everything. But no doubt this is really important in kids. Very much important in kids because in kids you don't have any hormonal issues. You don't have high inflammation because बच्चे जहाँ डिप्रेशन एंजाइटी है वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करोगे यू विल सर्टेनली हैव वेरी नाइस रिजल्ट्स बट फॉर अडल्ट्स एंड एल्डरलीज डाइट इज समथिंग जहाँ गट हेल्थ गड़बड़ है वहाँ आप न्यूट्रिशन से काम करते हो सर्टेनली वहाँ इन्फ्लामेशन आपका इम्प्रूव होने वाला है इन्फ्लामेशन कम होगा तो अ, किसी भी स्टेज पे हैं आप इनिशियल स्टेज पे हो थोड़ा सा आगे हो या लेटर स्टेज पे हो अगर आप इन्फ्लामेशन कम करोगे ब्रेन हेल्थ सर्टेनली इम्प्रूव होगी सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज वेयर यू आर सो जहाँ गट हेल्थ इश्यूज हैं इट हैज़ अ ग्रेट 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 रोल बट सपोज अगर उसके साथ कुछ हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म है इट नीड टू बी कंसीडर्ड आल्सो फॉर द ब्रेन हेल्थ so that's a one pillar and why I focus on this pillar is because this is something you can do at your home. You don't need any doctor. So certainly that will help, but that's not the everything. No doubt there is a role of ketogenic diets in certain cases, but it is not like one size fits to all. In certain cases, it is really helpful. So no doubt diet has a relation, but understand that diet has this role and there are certain other factors that need to be addressed.
If someone has hypothyroidism, if someone has diabetes, अगर gut health गड़बड़ है, so the other factors need to be considered. And diet, only diet, it works beautifully जहाँ IBS issues हैं, ये सब issues हैं, plus kids जहाँ depression, anxiety है and they are on processed food diets, HbA1c वहाँ गड़बड़ हो रहा है, that will work very nicely. Huh? So the most important thing for any individual is, should I share three secrets for diet and nutrition for everyone? So I'm sharing those three secrets. Permission granted. So Yes. first thing is, this is really important to go for 6 to 8 serving vegetables, 1 or 2 servings of fruits, Okay. seeds and nuts. This is really important, and avoid processed food and sugary diets, because we have just discussed about blood sugar stability, role for the brain health. One. Second, hydration, plenty of water throughout the day. This is really must. Three, protein rich diet and low carb diet. These are the three things that are really essential for anyone. For anyone, not only for the mental health, for any sort of physical health, these things are really, really important. So Pooja, go for next question. I think I will Yes, ma'am. huh. Yes, ma'am. So next question is diet to improve cognitive abilities. कि डाइट के थ्रू कैसे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाए. uh, इसे टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. First part is for any normal individual, like kids or adults, अगर thinking process refine करना है, so no doubt अगर वो gut को nourish कर रहे हैं, lifestyle अच्छा है, exercise है, plus repetition of those tasks, जो भी आप skill सीखना चाहते हो, repetition, वो रेपिटेशन, वो कॉग्निटिव स्किल्स को आपकी रेपिटेटिव लर्निंग एनहांस करेंगे along with nutrition lifestyle. Now going to the second category. Second category is, suppose cognition poor है, delayed है या कुछ memory issues है, understand किस एज पे हैं आप, तो वहाँ medical factors भी responsible हैं. For example, let me Okay. take examples. For example, if someone has B12 deficiency, or some memory issues are there, or some overthinking is going on, along with nutrition and lifestyle, that need to be addressed. So understand that one is a generic measure that will help everyone, but understanding the other part, कि suppose कोई deficit medically आ रहा है, तो that need to be addressed individually along with the generic things. Now, for example, uh, if someone is having obesity and someone is having recent memory issues, obesity and recent memory issues, so this is purely hormonal. Diet of lifestyle may help to certain extents, but the hormones need to be addressed. What exactly is the cause? क्यों हो रहा है सब? So no doubt that nutrition is important, but at the same time, what exactly is the cause? Fine. Yes, ma'am. So let's go to the next question. Yes, ma'am. Before moving on, there's a question in chat box also. So पहले पूछें या बाकी क्वेश्चंस के एंड में पूछें? विकास पांडे जी का क्वेश्चन है मैम. Let's cover this question first. यस मैम. विकास पांडे जी ने पूछा है कि मैम बायपोलर के लिए बताइए हिंदी में. मे बी डाइट के लिए पूछ रहे हैं कि बायपोलर के लिए क्या डाइट फॉलो करें. नहीं, let's go with the basics. बाइपोलर में देखिए, दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी लाइफ में दो तरह के फेजेस आते हैं. कभी आप उदासी में जाते हैं और कई बार आप तेजी में जाते हैं.
बाइपोलर दो वैरायटी का होता है, टाइप 1 और टाइप 2, ग्रॉसली। पर इसके अलावा देर अदर टाइप्स ऑल्सो, बट वील डिस्कस ओनली द टू टाइप्स जो बाकी सब लोग जानते हैं। बाइपोलर टाइप 1 इज जहाँ पे तेजी ज़्यादा होती है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। और बाइपोलर टाइप 2 इज जहाँ पे डिप्रेशन वाला फेज ज़्यादा होता है, एक्साइटमेंट वाला फेज इतना नहीं होता। नाउ कमिंग टू, बिकॉज आज का टॉपिक न्यूट्रिशन फॉर मेंटल हेल्थ है, mood disorder or depression, whatever it is, first your vitamin D should be optimized. टू, आप रेगुलर फॉलोअप में होने चाहिए, बिकॉज कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हुए बंदा एक्साइटमेंट में जा सकता है, रेगुलर फॉलोअप इज रिक्वायर्ड। थर्ड, गट हेल्थ शुड बी एड्रेस्ड। There are three things here. Let's go to next. यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा गया है ये सवाल। जब कार्य संबंधी तनाव से उत्पन्न डिप्रेशन के कारण जीवन निरर्थक लगने लगे तो क्या करना चाहिए? वर्क स्ट्रेस से अगर किसी को होपलेसनेस या ऐसा लग रहा है तो क्या करना चाहिए इसके? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस अगर आ रही है, अंडरस्टैंड डिप्रेशन इज ऑल्सो ए मेडिकल कंडीशन। आप आपके पास जो भी नियर बाय डॉक्टर है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, प्लीज गो टू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर विद फैमिली मेंबर्स एंड अंडरस्टैंड, आज के टाइम में देयर इज नो स्टिग्मा अटैच्ड टू इट, एंड इट इज, ये कंसीडर ऐसे किया जाता है कि मेडिकल इशू है। सो अगर मेडिकल इशू है तो यू नीड टू इन्फॉर्म पेरेंट्स, और एट द सेम टाइम जो भी मेडिकल प्रोफेशनल आपके साथ हैं, प्लीज इन्फॉर्म एंड ट्रीट इट, एक ट्रीटेबल कंडीशन है। सो दिस इज अबाउट डिप्रेशन, एंड if you have hopelessness and helplessness, this is the first thing which need to be done. These are all questions for today, ma'am. Shall we wrap? Yeah, definitely. So thank you everyone. There is one more question, just a minute. It was Okay, regarding ma'am. phenylalanine. So I would like to request, this platform is not for the purpose of the individual consultation. And ideally, this platform is for the education purpose. And as far as any individual decisions, it should be taken in one-to-one consultation only. So that's a disclaimer for this. Fine. So thank you, all of you. You have joined and you have taken time for this live YouTube session. And for next time, again, we'll share this Google form to you, and see you next time. Thank you very much. Bye bye. Thank you.